Okay. Conditional sentences. Today's topic is conditional sentences, or simply we call it conditionals. Conditionals, as the term indicates, term खुद बता रहा है, conditional. It means that there are some conditions in it. Okay. अब condition क्या होता है? Conditions are of two types. शराइत दो तरह के होते हैं. One is possible, another is impossible. Possible ये कि काम है, हो सकता है. Impossible ये कि ये बिल्कुल भी हो नहीं सकता. अगर आप किसी को कहते हो आप मुझे हवाई जहाज ला कर दो, आप क्या कर दो? आप मुझे हवाई जहाज ला कर दो, फिर मैं आपके साथ लाहौर का विजिट करूंगा, तो ये इनकार वाली बात होगी. ठीक है. या ये कहता अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं आपको गाड़ी दे देता. पॉसिबल है ये? अगर मैं होता, इस वक्त नहीं हूं इसीलिए तो बोल रहा हूं. अगर मैं बन जाऊं उसकी पॉसिबिलिटी है. मैं बोला अगर मैं होता, क्या इस वक्त मैं वजीर आजम बन सकता हूं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. आप मुझे आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ, इज इट पॉसिबल? नो. सो रिमेंबर, कंडीशंस आर ऑफ टू टाइप्स. Conditions are of two types. Number one, possible, another is impossible. Possible and impossible. Possible conditions are, there are two types of possible conditions. Number one, zero conditional, and number two, first conditional. And impossible are also of two types. Number one, second conditional, and number second is third conditional. Clear? So remember, conditions are of two types. One is possible, another is impossible. And these conditions are further divided into two categories each. Zero conditional and first conditional for possible, second conditional and third conditional for impossible. Clear? Yes. Okay. Rule number one, remember, conditional sentences are always made up of two clauses. Conditional sentences में हमेशा two clauses होते हैं. Number one, if clause या conditional clause. If clause या conditional clause. Number two, result clause या consequences clause. Result clause. अब what is the difference between the two? जो if clause होता है या conditional clause होता है, इसमें हमेशा शर्त बयान की जाती है. क्या बयान की जाता है? शर्त बयान किया जाता है. अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम वक्त पे आओ, अगर तुम ये करो, अगर तुम वो करो. जो अगर वाला होता है, जब तुम वक्त पे आओगे, ठीक है, जब तक तुम ये काम करते हो, ये जब, अगर, मगर, if, when, unless, until, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कंडीशनल हैं. सो दो हमेशा याद रखें, कंडीशनल सेंटेंस विल ऑलवेज बी कंपोज्ड ऑफ two clauses. In clause number one, we will always discuss the condition, and the clause number two will always be the result, the award of the reward of the condition. अगर आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे. शर्त क्या है? अगर आप मेहनत करते हो. सो जो ये वाला अगर वाला सिस्टम है, that clause is called conditional clause. और जो रिजल्ट है कि आप पास हो जाओगे, रिवार्ड होगा, that is result clause. Is it clear? So a conditional sentence will always be composed of two clauses, if clause or conditional clause and the result clause. Clear? Now I'll write some sentences, then we will compare. If you go to Lahore, go to zoo. If you go to Lahore, go to zoo. Clear? Another, if you work hard, you will pass the exam. If you work hard, you will pass the exam. तीसरा है, if I were
the Prime Minister, I would have given you a car. If I were the Prime Minister, I would have given you a car. If I had taken lunch, I would have gone with him. I would have gone with him. Now look at the board. If you go to Lahore, go to zoo. Is it possible? Yes. Yes, sir. Yes, there is possibility. You may go to Lahore. If you go to Lahore, go and visit the zoo. In the second sentence, if you work hard, you will pass the exam. Is there any possibility? Yes, yes, of course. Again, there is possibility कि अगर आप मेहनत करते हो आप पास हो जाओगे, possibility है. Yes, sir. ठीक है. थर्ड पे, if I were the Prime Minister, अगर मैं वजीर आज़म होता, क्या मैं वजीर आज़म हूँ? क्या मैं एकदम जिफी से अभी इस वक्त वजीर आज़म बन सकता हूँ? No. जब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता इसलिए मैं बोल रहा हूँ. If I were the Prime Minister, I would have given you a car. अगर मैं Prime Minister होता तो मैं आपको गाड़ी दे देता. इसका मतलब है कि मैं नहीं हूँ और ना ही मैं अभी इस वक्त बन सकता हूँ. फिर देखो, If I had taken lunch, अगर मैंने लंच किया होता या मैं लंच कर चुका होता, I would have gone with you, मैं तुम्हारे साथ जा चुका होता. इसका मतलब क्या है कि मैंने उस वक्त लंच, उस वक्त भी, यानी किसी पुराने ज़माने की बात हो रही, उस वक्त भी मैंने लंच नहीं किया था इसलिए तुम्हारे साथ नहीं गया. So these two conditions are impossible, these conditions are possible. Now look at the first one. The first one is called zero conditional. What is it called? Zero conditional. Look at the board and observe the sentence. इस sentence को थोड़ा सा गौर से देख ले. This is if clause. ये कौन सा clause है? If you go to Lahore. Which tense is it? Present tense. Okay, so always remember it is present indefinite. Remember, if clause of rule number 1, if clause of zero conditional, the if clause of zero conditional will always be in present tense. The if clause of zero conditional will always be in present tense. अच्छा, बोर्ड की तरफ देखें. Did I say present indefinite? No, sir. Did I say present continuous? मैंने कहा present tense. So it may be present indefinite, present continuous, present perfect continuous. यहाँ पे कोई भी present का tense use हो सकता है. Clear? अच्छा, अब दूसरा साइड लिखे. However, the result clause will always be in present indefinite. However, the result clause Will always be in present indefinite. क्या फर्क हुआ? will always be in present tense. यस, जब मैं बात कर रहा था कंडीशनल या इफ क्लॉज की, तो मैंने क्या कहा? इट मे बी एनी प्रेजेंट टेंस. हाउएवर द रिजल्ट मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. कोई और प्रेजेंट का टेंस नहीं होगा. क्लियर? यस, मेक वन सेंटेंस ईच. यस, मेक अ सेंटेंस. Conditional. Zero condition. If I Become. If I become a teacher, I will teach you. You said I will. This is not zero conditional. If I were you, no. If I say when I become a teacher. When I become a teacher, I will. Again will. I teach you. I teach you. Fine. Yes. If I am a doctor. It's not necessary only if. You can use when, unless, until. Until I become a doctor,
I treat you. Actually, when I become a doctor, I treat you. I treat you well. Yes. If I go to farmhouse, I plow the fields. Yes. Good. Yes. Hurry up. If I go to school, meet with teacher. I meet with teacher. When I go to school, I meet with teachers. जब मैं स्कूल जाता हूँ, टीचर से मिलता हूँ. Yes. If you go to park, go for the walk. Yes. If you go to park, go for walk. If I go to home, I play cricket. When I go home, I play cricket. If I go home, I play cricket. Good. Clear? Now, come to first conditional. First conditional, rule number 1. Observe it. Look at the board. Observe it. If you work hard, which tense is it? Past indefinite. If you work hard. If you work hard. Present indefinite. Simple present indefinite. It means that it also uses any present tense. Remember, first conditional, the if clause of first conditional, the if clause of first conditional The if clause. of first conditional will be in any present tense, Will be. in any present tense. The if clause of first conditional will be in any present tense. However, the result clause must be, look at the board, the result clause, ये कौन सा आ रहा है? Simple. You will pass the exam. Future indefinite. So, however, the result clause will always be in future indefinite. Future. Indefinite. फर्क क्या हुआ? Result clause will be, must be. Must be in future. Future indefinite. Yes. जीरो और फर्स्ट कंडीशनल में डिफरेंस क्या है? Tense. Sir, present indefinite. पहला जो है इफ क्लॉज दोनों का किस में है? प्रेजेंट टेंस में. वो कोई भी हो सकता कोई भी है. हो सकता रिजल्ट क्लॉज में कहाँ पे डिफरेंस आया? जो जीरो कंडीशनल है उसका होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, जो फर्स्ट कंडीशनल है उनका हमेशा होगा फ्यूचर इंडेफिनेट में. यस, नाउ मेक अ सेंटेंस. If you reach on time, you will receive your pass. You will receive your good. Yes. If you meet, we will a cup of tea. We will have a cup of tea. Yes, good. Yes, If I go to restaurant, Yes. I will take a cup of tea. good. When I go to school, I will meet teacher. I will meet with my teacher. If you get time, you will meet me. Yes, good. When I go to home, I will play cricket. When I go home, I will play cricket. Is it clear? Okay. Look at this was all about first conditional. Now look at this sentence. If I were prime minister. If I were prime minister. It means it is not possible. So this is second conditional. Which conditional? Second conditional. Remember, second conditional is, look at me. Second conditional is impossible now. Second conditional is impossible at present. वो काम जो कि at present इस वक्त नामुमकिन हो, नहीं हो सकता हो, वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? कौन सा कंडीशनल यूज करते हैं? सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, क्या मैं तुम हो सकता हूँ? नो, नॉट पॉसिबल. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी हो सकता हूँ इस वक्त? नहीं हूँ. इफ आई हैड मनी, अगर इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड हैव गिवन दैट टू यू, मैं तुम्हें दे देता. इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ. इट इज़ नॉट पॉसिबल right now. So second conditional we use for the impossible things in present. वो चीज़ें जो अभी इस वक्त मुमकिन ना हो, उसके लिए कौन सा conditional use होगा? We will always use second conditional. Number one. Number two, rule. Look at this.
Which tense is it? Past. If I were the prime minister. Past Past continuous. continuous. Remember, we will always use past indefinite. Which tense? Past indefinite. Which tense? Past indefinite. There is only one difference. इसको याद रखें. Verb will be used with all the persons. ख्वाह वो first person हो, second हो, third हो, उन सब के साथ कौन सा verb use होगा? Were only. बाकी कोई verb use नहीं होगा. Sir, can you repeat it? We will always use. Were with all the persons. Were जो है वो सब persons के साथ use होगा. आपके पास एग्जाम में सेंटेंस आया होगा. If I was the prime minister, I would have given you a car. तो लिखा क्या होगा? I was. अब हमें पता है कि I के साथ हमेशा क्या यूज होता है? Was यूज होता है. लेकिन सिर्फ सेकंड कंडीशनल में क्या यूज होगा? Were यूज होगा. और कहीं पे भी ये यूज नहीं होगा I के साथ. ठीक है? So in second conditional, were will be used with all the persons. Okay. Is it clear? So remember, in second conditional, the if clause will always be in past indefinite. कौन से indefinite में होगा? If clause. If clause कौन से होगा? Past indefinite. जैसे मैंने कहा, if I had a lot of money. If I had क्या है? Second form of the have है. ठीक है, third form भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने second form की तरह यूज किया. If I had a lot of money. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता, इसका मतलब नहीं है. ठीक है? And इसको थोड़ा सा गौर से देखें. Which tense is it? I would have given. Third form आ रहा है, have आ रहा है, perfect आ रहा है. So this seems like what I'm saying. This seems like past perfect. Seems like past perfect. So past perfect because it follows the rule of past perfect. But we will always use would, should, could, might. Clear? जो मॉडल वर्ब्स हैं वो हम मॉडल वर्ब्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो रिमेंबर, आई वुड हैव गिवन यू अ कार. In past, in second conditional, the if clause will always be in past indefinite. However, the result clause will be in past perfect with the help of modal verbs. With the help of modal verbs. Have given. Yes. It seems like it is present perfect, but because of would, it gives the sense of past. Clear? Okay, sir. So can you repeat the formula? The formula is in second conditional, the if clause will always be in past indefinite. Okay, sir. However, the result clause will always be in past perfect. And why is it in past perfect? जबकि हमारे पास have given है, because of would it converts into past perfect. और would क्या है? It is a modal verb. Yes, make a sentence now. If I was civil servant, I would have resolved this issue on time. Oh, great. If I were means you are not at this time. Inshallah, you will be. Inshallah. Yes. If I were a teacher, I would have given you lecture. Good. Yes. If I were the Secretary General of UN, I would have solved the issue of Kashmir. Good. Yes. If I were a car, I would. If I had a car. If I had. Listen. वर उस वक्त यूज करना है जब आप अपना स्टेटस बता रहे हो, जब आप अपना पोजीशन बता रहे हो कि मेरे पास अगर गाड़ी होती, तुम यही बोलना चाह रहे हो, तो फिर हैड लिखो. इफ आई हैड अ कार, आई वुड हैव ड्रिवन. फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा. यस. If you were the governor, you should resolve. You should हैव रिजॉल्व्ड. have resolved this. Yes. He should have resolved the problem. Yes. If I was go to whom If I, was don't say was. If I were, if I were, go to whom? don't say go. Simple say if I went home. Yes, sir. Simple past indefinite ना? If I went home. Yes. Yes. I would have played cricket. Yes, I would have played cricket. अगर मैं घर गया तो मैं अगर मैं घर गया होता तो मैं क्रिकेट खेल चुका होता.
It means ना आप घर गए ना आपने क्रिकेट खेला. Is it clear? Okay. Look at the third one, the final one. In third conditional, if I had taken lunch, which tense is it? Past perfect. Always remember the conditional clause of third conditional. Which conditional? Third conditional. The conditional clause of third conditional will always be in past perfect. In which tense? Past perfect tense. Past perfect. So if clause must be in past perfect. Yes. The if clause of second conditional, third conditional is always in past perfect. And what about the result clause? The result clause too is in past perfect. However, don't say. Say and. However हम कब यूज करते हैं? जब हम बात चेंज करना चाह रहे हो. लेकिन जब बात वही हो फिर हम and लिखेंगे. And the result clause will too be in past perfect. यानी इसका फर्स्ट पार्ट भी past perfect में, दूसरा पार्ट भी past perfect में. अब हम ये यूज कहाँ पे करते हैं? Listen, look at the board. Look at me. Third conditional is used when something was impossible in past. यानी थर्ड कंडीशनल हम कब यूज करते हैं? जब एक काम माजी में भी नहीं हो सकता था. सेकेंड कंडीशनल कब यूज होता है? जब एक काम प्रेजेंट में नहीं हो सकता. और थर्ड कंडीशनल कब यूज होता है? जब एक काम माजी में भी नहीं हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपसे 5 साल पहले गाड़ी मांगी. क्या मांगा? आप उसको गाड़ी देने के आपके पास गाड़ी नहीं थी, सो आप उसको गाड़ी नहीं दे सकते थे. तो आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाता है. ठीक है, आपके दोस्त ने आपसे कब गाड़ी मांगी? 5 साल पहले. आपके पास गाड़ी नहीं थी. तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे? इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इसका मतलब मेरे पास उस वक्त भी गाड़ी नहीं थी. मेरे लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गिव यू. इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन दैट टू यू. अगर मेरे पास उस वक्त गाड़ी होती, यानी कि मेरे लिए उस वक्त भी पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको गाड़ी देता. सो इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन दैट टू यू. लेकिन मेरे पास उस वक्त भी गाड़ी नहीं थी. सो थर्ड कंडीशनल इज इम्पॉसिबल इवन इन पास्ट. ये वो कंडीशन है जिसमें किसी के साथ अच्छाई करना या कोई चीज देना इवन पास्ट में भी पॉसिबल नहीं था. इफ आई हैड टेकन लंच, अगर मैं उस वक्त, अभी की बात नहीं हो रही है, ये पिछले जमाने की हो रही है. अगर मैं उस वक्त, अगर मैं लंच कर चुका होता, आई वुड हैव गॉन विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा चुका होता, लेकिन मैंने उस वक्त लंच भी नहीं किया था, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं गया. ठीक है. सो इन दो में फर्क क्या है? सेकंड और थर्ड कंडीशनल में फर्क क्या है? सेकंड कंडीशनल इज इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट. थर्ड कंडीशनल इज इम्पॉसिबल इवन इन पास्ट. ठीक है. इट इज इम्पॉसिबल नाउ, it was impossible then. Now, then. It is impossible now. It is impossible now. It was impossible then. Then का मतलब है उस वक्त. ये अब नामुमकिन है, ये उस वक्त भी नामुमकिन था. इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? थर्ड कंडीशनल. और थर्ड कंडीशनल का फार्मूला क्या है? कि both of the clauses are in past perfect. Is it clear? Yes. एक सेंटेंस बना लो. If I had a car. If I had a car. Because past perfect. Yes. I would have visited to northern areas. Good. If I had a money. If I had. Listen. If I had, मैं 2 दफा had यूज कर रहा हूँ. One had is past perfect helping verbs. Another one is main verb for possession. If I had money. Yes. I would had given you. I would have. would के बाद हमेशा have आएगा. ठीक है, had नहीं आएगा. I would have given you. Good. If I had a helicopter, I would have visited the world. You can use another sense as well. Like I have written, if I had taken. Okay, सिर्फ had पे नहीं रुकना है. Yes. Possession पे नहीं रुकना है, और भी sentences है. You can also say that if I had taken a helicopter. No. If I had gone to Karachi. If I had gone to Karachi, I would have visited Qaid Azam Monument.
अगर मैं कराची विजिट कर चुका होता है, उस वक्त भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है. इफ आई हैड, लिसन, इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर मैंने अच्छी तैयारी की होती, आई वुड हैव सिक्योर्ड पोजीशन, मेरा पोजीशन आ जाता. यानी उस वक्त भी मेरा पोजीशन नहीं आ सकता था. क्यों? क्योंकि मैंने उस वक्त भी तैयारी नहीं की थी. मैं उस वक्त भी नालायक था, अब भी नालायक हूँ. यस. If I had a good teacher, If I had had a good teacher, I would have learnt a lot. helped you. I would have learnt a lot. I would have helped you. Yes. If they had got free time, Yes. they would have gone with us. Good. Yes. If I had gone to home, I would have. I guess you are caught by nostalgia. You know nostalgia? Nostalgia. Nostalgia. Nostalgia is a state in which a person misses home. कि बस मुझे घर जाना है. ठीक है. जब घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, हम कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया हो गया है. क्या हो गया है? नॉस्टैल्जिया. अब आपको इस सेंटेंस में नॉस्टैल्जिया हो गया है कि मुझे घर जाना है और घर जाके क्रिकेट खेलना है. तो हम क्रिकेट का इंतज़ाम यहीं पे कर देंगे आपका, अलबत्ता घर का नहीं हो सकता. ठीक है. So this was all about conditional sentences. Yes. My sentences are correct. If I become a civil servant, I solve the issues. If I work hard, I will be a CSP. If I were a CSP, I would have solved the issues. If I had authority, I would have solved the issues. Clap it for him. Very nice. Very nice. आपने सिविल सर्विसेज में सारे सही बोल दिए. Is it clear? Yes, sir. Okay. See you people inshallah in next class.